खेल मजा नहीं है तो खेलो मत. Salam, namaskar, sat sri akal, vanakkam, whatever you want to say, you must come out. Thank you very much inviting me, giving me this opportunity to come and talk here front of bright student. I was very poor student. I was very, very bad student. That's why I played. Had I been a good a student, I don't think so I would have played cricket. And if my parents, I would have listened to them too much, I wouldn't have been standing here in front of you. I believe life to me is a passion. Passion doing things. It's not only playing cricket, doing passion, whatever you want to do. Whenever I used to go to the school, which I hardly went, my passion was how to run away from the school. It's a passion. And that's how I developed myself to be passionate person about things. The biggest passion in this world is when you are in love. That is the ultimate passion. And I often used to say to my colleague, if that passion, when you are in love, you want to have a date with your opposite sex, can you bring that passion into your ground, into your life, into your class? Whatever you are doing, nobody can beat you. You all gone through the love affairs. When you are 20 and you are in love, if your girlfriend say call me 3 o'clock in the night, suddenly you will call even you don't have a watch. Because that is the ultimate passion. Nobody teach anything on that side. The only thing parents don't teach you, and you become expert. That's the only thing. Because that's the ultimate passion. Can you bring that passion into your life? And that's what I did with my life. And I always feel you should be passionate, whatever you are doing in life. And as you start growing, you start learning things. Like I learned from certain people. My objective was only one thing. If I meet somebody, what best I can pick from him. And there is other type of people, they are looking for what mistake he's doing. I'll catch him and laugh at him. If I used to speak wrong English, people laugh at me, but I used to learn from them. So I used to say, learn good things in life, you will be a positive person, or you want to be a negative person. To me, half glass full is there. That is a positive thing. Just now, they were doing my introduction and say 183 is not enough. I think 183 is hell of a lot score. You start counting, it will take time. And sometimes 300 is also not enough. It's state of mind what you have is important. If you can think that way, then you are ready to fight. And that's what we did in 1983. When people don't expect it's good, it's enjoyable to prove sometimes people wrong. Not always. Whenever it happened in my life, they said, he can't do that. I said, okay, let's try to prove him wrong in a positive manner. When they made me captain of the country, they said, he can't talk in English. How we can make him the captain of the country? I said, I'll play. Bring somebody from Oxford University who can talk. I think people should understand you recognize for your talent, not speaking. And speaking wasn't my forte. My talent was to play cricket. Did I play well? That was important. But in cricket, as so many people think, no, playing is not important, how you talk is important. And that's where I don't agree.
The best thing in life is, are you good whatever you are doing? And that's the best thing in life. I have a passion to play, not cricket, to just play. And that's important. I always say sports is more important than cricket. You should be passionate. Then you pick up your career on something. And I love flying kite. I love playing marbles. Anything you can say, where is a play, I will play. And I will say any sports, not cricket. And in Chandigarh, there used to be 4 or 5 seasons. Every season, we used to play different things. So that's the passion keep on increasing. And I played all the sports in my time, whichever sports we have in our school. But slowly I come to know the only way I can run away from the school is if I play cricket. And that was because cricket lasted for 3 days to 5 days. And hockey match lasts for 1 hour. So I can't miss the school. So I start playing cricket. So teacher can't say anything. Oh, he's gone to play cricket. So 3 days cricket you are playing. So that just happened. And second stage was I couldn't study. I love movies. I think all of you love movies. I love movies, and I've met recently Amitabh Saab, Bachchan Saab. I said, I blame you most of the time because you were so superstar during that period. In 70s when I was in school, I know all your dialogues, everything. And in front of the mirror, I used to stand and like to talk like that. How are you? I'm doing like all those things. But again, I wasn't good enough that, so I was good in cricket, and I realized that I never try to be duplicate, be original. And when you say you're original, then you pick your passion and try to do something. After that, I never copy anybody. I said, no, I like to be myself. And wonderful things happen is I start playing cricket and I can see the world. Somebody asked me, if you've not played cricket, what you have done? I said, quietly, chai ki dukaan. Never know. I was in timber business, I would have done that. But from there, journey took place is when I step out from Chandigarh, my heroes keep on changing and my life keep on changing. My hero was my brother, my head boys of my school. He was my hero. Then the state captain was my hero. But when you travel around the world, then your heroes keep on changing because your growth start taking place. If you remain in this university throughout your life, your growth will stop. But you have to go out and see the world, and that's where the growth start taking. Only way it can happen is if you have to open your mind. Somebody said when I start playing cricket, Kapil, you want to be successful in your life, keep your eyes and ears open while sleeping also. It took me time. I said, he knows more better English than me, but I think what he said, keep your eyes and ears open while sleeping also. I said, I don't know, he come from a different part of the world or different planet where it happened. But he said another sentence, don't literally go what I said, understand the meaning. The meaning was, keep your eyes and ears open what's happening around you. If you want to be successful, today you are a player, tomorrow you can be a captain. But keep noticing what's happening here, which help you when you reach in that stage. And that give me so much strength. Whichever part of the world I went, wherever I went, I always like to take more knowledge. And I say that knowledge is a strength, not anything else. If you are educated, it's not the number make difference.
how much knowledge you have about that. That's make different. And that's what I did in my small life. Small, I'll put it small, I still have to go a long way. And that's what it happens. So you keep on changing yourself time to time. And I said, I'm so happy I played the game cricket where I met a wonderful people. Somebody asked me, which is the most important day in your life? Somebody asked me that. And I said, most important day in my life? I said, the day I born. It's not the day I pick up the cup. If I have not born, I wouldn't have done anything. So to me, my birthday was the most important day. That's how the life keep on changing. I played for India. I enjoyed. I rubbed a lot of people because I was very hard. I was straight because I didn't like to talk behind anybody's back. I used to say straight on the face. And cricket is played by a gentleman. Not anymore. These young kids are much more ruthless than I was, right? I mean, these young boys I admire them. I say, I wish I can be like them. They can say things. I mean, we were subdued. When I went, I didn't come from a cricketing background. I come from a very agriculture background. And they all come from a very cultured background. The difference was, I was agriculture, they were culture. I step into the culture also, I learned. They couldn't learn agriculture at all. So I have that much advantage because I used agriculture into cricket also. And that was the best part. But so-called in India, one thing I like to tell you, all of you, wherever message is going, be proud about your language. It's important. Not English. If you know English, it's very good because you can communicate. But it's important to know your native language, where you're born and bred up. If you are shy about that and try to look for the ways, no, I don't know English, what can I do? You're not going to succeed. Be honest to yourself. Say, this is my language. I know my language, but I can speak English if I require. That's the way I look at the life. But so many other things happened. When I reached to the Test cricket, I played, represent my country. It's the biggest thing is when you go out and play for the country. The feeling, and there is no word in the dictionary one can explain how proud you feel when you represent your country. And then it come to is last 20 years I start playing golf. What golf gave me is much more happiness than anything else. What I realized that cricket, I was always depending on somebody. Golf, I'm not depending on anybody. I'm a very individual person who take a pride about my own performance. And if I haven't done well, I'm ready to take criticize myself. So the second inning is very beautiful, playing golf, meeting one of the fantastic people in this world. I played 16 years of my country and I didn't make 10 friends. I played 16 years of golf. I make 100 friends who will give life to each other. And that's what it happened. And that's what the life is.
सीधा ही जाने दो आप ऐसा खेलो मत, सीधा ही जाने, सीधा ही जाने बराबर। आप क्या ले रहे हो, ऐसा और ऐसा खेल रहे हो, एक इधर जा रहा है इधर जा रहा है, खेलना किधर अपने को इधर खेलना। Cricketer have what character? Which player, which school has a character? So if you build character in your kids, they will always succeed in life. They may not get gold medal because only one kid will be number one. But I think in school the character is very important. And what I was talking to all the teachers, I said build the character in kids. That's all. If you have a character, you have the something. So I like to tell all the parents, yes, you want to see your kid doing well. Whenever the kids were coming, जिसके पेरेंट्स बैठे थे वो सबसे जोर से ताली बजा रहे थे. Is that true ना? जब जिसके बच्चे आते थे तब ताली बजाते, दूसरों के लिए भी बजा रहे. उनको भी encouragement चाहिए. If you feel other kids are like your kids also, the world will become much better. Everybody can't play for the country, but one thing is for sure, everybody can play. Everybody can play, and that's very, very important. What we say, if you play the game, one thing is important, you learn in life how to take loss and win in the same breath. आप 0 भी बनाते हो, आप 100 भी बनाते हो, लेकिन हर रोज 100 नहीं बनता और हर रोज 0 भी नहीं बनता. If you keep on working hard, the bottom line is to work hard. For parents, you understand, you come to the teacher, हमारे बच्चे को ये कर दो, हमारे बच्चे को वो बना दो, but understand that they are only 5 or 6 hours in the school. Rest of the time is with you people. It's not teacher can do something wonder. Teacher only look into the excellence in the kid. उनमें क्या खूबियाँ हैं, and then they work. But 90% job have to done by the parents also. And if you teach them truth, they will be much better in the school. अगर आप अपने बच्चे के साथ सच रहोगे तो स्कूल में उसको प्रॉब्लम नहीं आ सकती. So I always say to the parents, try to be honest with the kids. If you are honest with the kid, they will succeed in life. अगर आप घर में झूठ बोलते हो, बच्चा वही सीखता है. So it's very, very important. For teacher, only I can say you are doing a great job, a wonderful job for giving education. Somebody asked me today, what are you missing in life? I said only education. Because I wasn't a good student. I was very poor student. पर उस समय नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था. जब क्रिकेट खत्म हुई तो पता चला पढ़ाई का क्या मतलब है. इट्स इम्पोर्टेंट टू बी एजुकेटेड, क्योंकि खेल आपका एक हद तक जाता है, एजुकेशन सारी उम्र जाती है. लेकिन खेलना आपको हार और जीत सिखा देता है, जो पढ़ाई नहीं सिखाती. इसलिए
मैं चाहूंगा कि all the teacher try to do their best. Everybody has a hero. I have a hero. I had a hero. He died 7-8 years back. Nelson Mandela. I don't know कितने लोग उनके बारे में really जानते हैं कि नहीं. साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे और कम से कम 26.5 साल जेल में रहे. 26.5 साल जेल रहने के बाद when he come out, उनसे पूछा, what do you have to say about the people? Look at a difference between people to people. He come out and said, मैंने उन तमाम लोगों को माफ किया जिन्होंने मुझे जेल में डाला. माफी देना कितनी बड़ी चीज है. और आज के स्टूडेंट क्या, पेरेंट्स क्या टीचर को माफी नहीं करते अगर कोई गलती टीचर से हो जाती है. राइट. आई थिंक टीचर भी नहीं माफ करते किसी बच्चे से गलती हो जाती है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लर्न. आवर जॉब एज टीचर टू टीच देम सेल्फलेस. कोई किसी की तरफ ज्यादा नहीं होना चाहिए कि मैं इसको खास करूं. फॉर अस ऑल द किड्स आर द सेम. यस, सम किड्स बिकम मच मोर बेटर बिकॉज दे गिव यू द रिजल्ट. क्रिकेट में भी होता है, जो रिजल्ट देता है उसको आप पसंद थोड़ा करते. इसमें कोई कमी नहीं है. होता है, ह्यूमन नेचर है. बट व्हेन यू बिकम अ टीचर, योर जॉब इज टू गिव बेस्ट एजुकेशन टू एवरीबडी. Because tomorrow these kids can be a prime minister, doctor, engineer, और आप सब यही रहो. इसलिए टीचर को ये देखना है कि मेरे कितने स्टूडेंट जाके कल ऐसे ओहदे पर पहुंचते हैं where they can feel proud, and all the parents to understand they are going to remain here. Without them, your kids cannot become doctor, engineer, scientist, or anything. So it's the friendship between teacher and parents, which we should value. And again, ज़्यादा नहीं कहूँगा. पहले तो कहते हैं स्पोर्ट्समैन को एक ही चीज सिखाई जाती है कि सिर्फ खेलो, मुंह बंद रखो. और जब छोड़ देते हैं खेलना उसके बाद कहते सिर्फ बोलो खेलना. तो आजकल थोड़ा सा बात करने अच्छा लगता है. इतने सालों की वो प्रेशर रखा हुआ है दिमाग में कि जब हम खेलते हैं बोलने ही नहीं देते. आई एंजॉय what I get, love and affection from people. I have no word how to express that. Neither कोई डिक्शनरी में ऐसे शब्द हैं जिसको मैं बयान कर सकूं कि ऐसे थैंक यू कहना चाहता हूं. What I carry the love and affection of my country, and that's the biggest reward I can ever. इसलिए जाने से पहले कहूँगा थैंक यू वेरी मच. स्कूल को यही कहूँगा कि इट्स अ ग्रेट थिंग. अगर बच्चे होते तो उनको कहता कि थैंक्स द पेरेंट्स हु आर गिविंग यू सच ग्रेट एजुकेशन, ब्रिंगिंग टू दिस स्कूल एंड गिविंग यू एजुकेशन. बच्चे नहीं है तो इसलिए आप पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं. क्योंकि these are the people have to look after our country tomorrow, and that's important. Not look after your house, look after the country. Look at the bigger picture in life. जब हम क्रिकेट खेलते हैं, don't look for your team, look for the country. It's behind you. It's important. We become ambassador of all the students become ambassador of this school, and that's what is the biggest thing in this world. So thank you very much for the opportunity to invite me. Stage पे भी इसका मतलब सही होगा. अच्छा, question answer. But I would like to say one thing here. Kapil sir da jawab nahi.
थैंक यू। अच्छा, कौन पूछना चाहता है Yeah, क्वेश्चन? any questions from the audience? और जोर से पूछे। देखो माइक कोई नहीं है, बिना माइक के आप बोल सकते हो तो जोर से बोलो। अब माइक बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। Okay, there's a loud voice there. हाँ बिना कोई जरूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन बन जाओ। हाँ जी। Said one thing that this honesty and this character starts or plays a big role. So it starts from school also itself. No, start from the home. अगर आप फोन उठा के बोल रहे हो, आपकी वाइफ बोल रही है कि बोल दो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए, किसी का फोन आता है, तो बच्चा सीखता है कि मेरा बाप झूठ बोल रहा है। तो आपके क्वेश्चन सही है, लेकिन कैरेक्टर भी घर पे भी साथ में स्कूल में भी आते हैं। अगर बच्चा पहले 5 साल ये देखता है कि मेरा डैड झूठ बोलता है, मेरी मॉम झूठ बोलता है, तो वो क्या सीखेगा? तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप झूठ मत बोले तो बच्चा सच बोलेगा, और सच की हमेशा जीत होगी। क्या बात है, क्या बात है। We hear a lot about millennials. I'm sure you also heard a lot about millennials. जिनमें patience कम होता है, and sports is one thing which teaches you how to practice. So as a mother, as a part of the school, my question is कि बच्चों को इस एज में जहाँ टेक्नोलॉजी में सब कुछ ऐसे से फास्ट होता है, तो पेशेंस थोड़ा कम होता है बच्चों को, कैसे प्रैक्टिस का वैल्यू कैसे उन्हें सिखाते हैं? अभी कुछ दिन पहले आई वाज गोइंग टॉकिंग, डिबेट हो रहा था। कहते हैं आजकल के तो बच्चों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्या आप क्यों पढ़ना? कहते हैं गूगल है, सब कुछ बता देता, पढ़ने की जरूरत क्या? आपको क्या क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो गूगल बता देता है। गूगल ये नहीं बताता कि आप अपनी सोसाइटी में कैसे रहोगे, कैसे आप अपने स्टूडेंट के साथ सीखोगे। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीखना, और जब सीख मिलती है तब आपकी ग्रोथ होती है। योर क्वेश्चन वाज कि हाउ पेशेंस खत्म होती जा रही है। पेशेंस स्टार्ट फ्रॉम होम। अगर पेरेंट्स पेशेंस नहीं दिखाएंगे बच्चों के लिए तो बच्चे क्या सीखेंगे? सो 90% आई से द पेरेंट्स शुड हैव इनफ पेशेंस फॉर द किड्स। आप रिजल्ट का इंतजार करते हो, हम कैरेक्टर का इंतजार करते हैं। आप कहते हो कि ये सब स्कोर बनाए, हम कहते हैं टैलेंट। जो टैलेंट होगा वो आ ही जाएगा सामने। आपने अक्सर नाम सुना होगा कि विनोद कामली का नाम सुना? यस, सुना था। बहुत टैलेंटेड थे, पर उनमें क्या कमी थी? माइंडसेट कम था। सचिन तेंदुलकर भी उतने ही टैलेंटेड, उनमें क्या था? सोच थी। तो समटाइम टैलेंट से ज्यादा योर पहचान जो आपके आसपास रखते हैं, दैट टेक यू टू द लीडर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप जब स्कूल में आते हैं एक टीम वर्क सीखते हैं, और टीम वर्क is end of the day the strength of the country, strength of the school, strength of your state and any corporation, and that's what we believe in. Individual cannot do anything, but collectively you can achieve everything in life. Thank you, sir. So well said. I Any have one questions? question. Yeah. Paji, Sat Sri Akal. Thank you for honoring this event. पाजी 17 पे 5 जिम्बाब्वे का वो हम लोग आपका देख नहीं पाए। आप जब वर्ल्ड कप में आए हो बैटिंग करने के लिए, क्या मेंटल टेम्परामेंट था सर? थोड़ा 5 मिनट अगर आप बता पाए, रियली दैट वुड बी ग्रेट। पढ़ाएंगी ये सत्रिका कहाँ पर? सर दिल्ली का मुंडा हो गया। अच्छा, 10th कहाँ पर? 10th दिल्ली क्या? उस दिन क्या किया था? सुबह क्या खाया था? याद नहीं है, याद नहीं है। याद नहीं है।
इम्पोर्टेंट इतना डे इम्पोर्टेंट जिंदगी का आपको याद नहीं है और कहते मुझे बताओ कि मुझे याद होगा, मुझे कैसे याद होगा? वो तो 20 साल पहले देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो कहानियां बताते हैं, एक होते हैं जो कहानियां बनाते हैं। हम याद रखने वालों में नहीं है, हमने याद रखने वालों को देखा था, तुम बताओ, हम कहानियां नहीं बताते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। परफॉर्मेंस के होते हैं, we believe in it. And here stands the game changer of that match. So, Kapil. a huge round of applause. Never rest. I often said that God had given you few days in your life. ये तो सारे दिन आपके हैं। कुछ दिनों पे आपको ज्यादा इज्जत मिलती है, तरक्की मिलती है, प्यार मिलता है, जिस दिन आप शादी करते हो। तो कुछ दिन भगवान ने आपके लिए बनाए थे खास, वैसे तो सारे खास हो, शायद वो दिन मेरे लिए खास था, तो इसलिए वो दिन मैं तो नहीं भूल सकता, पर बहुत अच्छा लगता है जब आपका अच्छा दिन बाकी लोग याद रखते हैं। क्या बात। Full. Superb. I guess that would be the last question for today. Thank you. जब इंडिया का मैच होता है उस दिन हमारे लिए खास होता है। मेरे लिए भी खास होता है। अगर आप हिंदुस्तानी हो तो कहने की भी जरूरत नहीं है। So how did you find your passion for एक cricket? मिनट वो खत्म कर ले। One moment. Please still with the question. प्लेयर का कैरेक्टर ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है, ये देश का कैरेक्टर ऊपर टीम डिपेंड करता है। पाकिस्तानी टीम एक एग्जाम्पल है। आज हमारे लेबर डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो जब कोई मुश्किल में होता है तो उनकी ज्यादा बात नहीं करता। Yes, that girl is Yeah, one last question from the So student. how did you find your passion for cricket and that you wanted to be a cricketer? I didn't want to be a cricketer, honestly. I want to be a sportsman. मैं क्रिकेटर नहीं था, मैं खिलाड़ी था जो कुछ भी कंचे भी खेला करता था, पतंग भी उड़ाया करता था। मेरे को सिर्फ खेलने का शौक था। फुटबॉल मिलती थी, वो टेबल टेनिस मिलती थी, वो जो भी पढ़ाई से नहीं था, वो तो इसलिए मेरा पैशन था। So I used to just play, but when I say, not I will tell all the kids, when I went to the school, I used to play football. फुटबॉल के लिए सिर्फ क्लास में 2 घंटे की छुट्टी मिलती थी, क्रिकेट खेलने के लिए 3 दिन की छुट्टी मिलती थी। So 90% जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, समझ जाओ। Thank you, sir. Thank you very much once again. So, there are some bags to be signed. So, kindly present those. Yes. No, I'll sign sitting there. Yeah, That's sure, no sir. problem. Sure, sir. Thank you very much once again. All the principal, teachers, well done, wonderful job you are doing. Standing ovation, please. No, come on, give it up. Sir, you're the legend. You're the maestro. Ladies and gentlemen.
पैर निकालो। ऐसा बोले क्या हुआ? टारगेट पकड़ लिया। इधर प्रॉपर मारना है प्रॉपर से ऊपर आप इसको जाना आप इसका जाना लास्ट बॉल खेलो ना चलो बाद में टाइम रहेगा तो बाद में खेलो 9 के बाद भी खेलो 9:30 तक भी खेल सकते हैं चलो चलो एक और चलो आप उस पर जाना अमर रुक ना देखो लास्ट बॉल अमर लास्ट बॉल डालना इनको एक बॉल 4 रुको सर लास्ट बॉल है एक बॉल 4 नॉकिंग आगे देना बैठ के नीचे
उसको नीचे डालेगा, बैट के नीचे। इधर इधर दोस्तों मत वो लूटेगा यार दूसरा जा लग रहा है नहीं करेगा पड़ेगा बहुत लेट है, पहले से रेडी रहा करो। बाय the last 10 more.
आपल्या ऊपर है तो मैंने रखा बाकी अरे लास्ट पूरा बाहर चले गया तो कैसे अंदर आ गया अच्छा मुझे मार दे अंदर आ और अंदर आ ऐसे करो ना चार बोलो दूर दूर से क्यों गिर रहे सीधा सीधा रोको ना होल्ड करो क्या पैडअप कर हेल्प बोल और एक मिनट बाइक का आदत है डर लगता है सर ने बोला कैमरा को लगने चाहिए एक आधा स्ट्रेट ड्राइव बोल स्ट्रेट नहीं मारना
एक कभी लग गया अगर गलती, वो भी थ्रो में ही लग जाएगा, थ्रो करते थ्रो कोई करेगा नहीं। लेफ्ट आर्म रहते तो मैं आता था पैड लेकर। अरे लेफ्ट आर्म यार, लेफ्ट आर्म बॉलर चाहिए अपने को। नॉट है वो भी बीमर वाला। डाल देता था, डाल देता था ऐसा ऐसा रिफ्लेक्ट करने का ना इसमें मुझे थोड़ा लगता है मैंने अपनी तो ठीक हो रहा है तो मेरे को किससे मारा है। क्या इधर बाउंसर डाले, पागल पागल हो गए। एक आधा आर्मर मारेगी, दो जन थे जैन है प्रसाद है। फ्लैट हो गया रे, तू इंडोर उस पे खेला है ना बहुत। नहीं इंडोर नहीं खेला उससे ऊपर के, अबे ऊपर के ये भी गया, ये गया ये थोड़ा खेलवाया था। ज़्यादा ही पानी लग रहा है। कल वाला पीगा है अलग बाल्टी में। क्या चीज? अलग बाल्टी में मेरी माँ बोलती उसको अलग क्यों डाल रहे? वो तो मट्टी है। की बैटिंग होगी। स्टार को भी करना ही पड़ता है। हाँ तो 7 जैन लोग स्टार हो गया अभी।
बॉलिंग हो रही है कल 1 मिनट से 1 मिनट हाँ विकेट भी तो चाहिए इधर नहीं बॉडी को झुकाना नहीं सीधा रखो टाइम बॉडी को झुकाओ मत ऐसा झुकोगे तो और नीचे जाएगा स्ट्रेट रखो बैठा हुआ स्ट्रेट रखो हो सके स्ट्रेट ऊपर बोल क्या हुआ 10 बॉल में ही 10 बॉल ही हुआ है ग्लव लेके आना ग्लव अच्छा होता है लेकिन ये थोड़ा फास्ट है थोड़ा स्लो चाहिए आज किधर मेरे को डर लग रहा है मैं स्लिप हो रहा हूँ 2-3 अपने को हीरो नहीं बनने का सर ले लें हीरो बनने गया तो सर हॉस्पिटल बाजू में ही महंगे वाला और क्या ये 1-2 बार आया था सब आए जनवरी में सोमैया में फाइनल है ना प्रवीण तांबे के अपोजिट ही फाइनल है पेट आ गया रे मेरे को पेट आ गया उधर बॉलिंग बंद कर दिया जा रहे हैं सीधा जा रहा है हाँ भैया भैया हल्का सा लेके एक्शन लिखो ना आप हाँ इधर हल्का सा सीधा हो
एक और बॉल है मेरे बैग में तो बोल्ड झुक पदार्थ महेंद्र इथे टाक बरोबर आहे चालू अच्छा आहे ना टाइम पास कर रही है हाँ इधर टाइम पास चालू ना उसको आराम से भरो भरो आराम से पहले भर के लो इसका दूसरा बैट लाओ ना ये बैट आ रहा है क्या चीज बैट उसका आ रहा नहीं है निकल जाता है फिर से बोल्ड स्टंप बराबर कर स्टंप 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 बराबर करो काट रे
हम गार्ड उसको पहना है, कर दोनों में अंदर लगा वाले अंदर अंदर में लगा लगाया करो। के पीछे लगा। बात है यार, वेल बोल यार। बैठ पीछे अंदर आ। बच्चे लोग का यही आता है। डालने वाले जाएगा पहले अंडर 16 अंडर 14 में आएगा। बैट और बना था कैमरा पे मारना। चलो मैं इतना बेस नहीं आने चालू हो जाए। बहुत अच्छा। हेलो खाना दे रोको, होल्ड करो, मिडिल सिस्टम का बॉल। तो थैली किसका है? सब बॉल अपना उसमें रखे। यस करो। तो दिखेगा ये बॉल दिख रहा है? रेड दिखेगा? रेड चाहिए, ये लो ले लो, चलेगा ले ला। डालो।
डेढ़ राइट बॉल में सर बटे देना, राइट बॉल का अलग। वाइट बॉल क्या होता है, आईडी होता है, डिप ज़्यादा होता है, टेंट ज़्यादा मारते हैं। कट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जोर से पंच करना अभी। बॉडी का झुकना ज़्यादा होना चाहिए, झुक नहीं पा रहे। जितना हो सके ना ऑप्शन के बाहर से फ्लाइट फेंकें। और क्या ले लेना। धूप में रखो तो थोड़ा वो मारे। निकाला उसमें ही पतरा होगा। हाँ इधर रखो, इधर धूप में रखो, वो सब बॉल रखो। हाथ को ऐसा मूवमेंट करो, बॉल गिरने के बाद इसका मुड़ना चाहिए। सबको ये हाथ को जैसे ले लेना, फिर यहाँ से रिलीज करना। वाइट लाइन करो, यहाँ पे घुमाओ। हाँ थोड़ा ऐसा घुमाओ उसको,
क्यों मारा? क्या बोला अभी? नहीं मारने का, मारने मत जा। 6 बॉल 15। अरे घुसना अंदर, और जा अंदर। चलो चलो, डालो स्टंप पे, डालो उसको आउट कर। हाँ यही करो, रेडी रहना। चलो क्विक जाना, क्विक, और क्विक जाना। चलो फिर से, बोल यार, और अंदर है, साइड देना, जरा साइड देना। बैठा 15। फिर से रेडी, वॉच, बोला वॉच। इधर नहीं, डिफेंस करो। ऐसे थोड़ा मूवमेंट फास्ट करेगा, मूवमेंट फास्ट। चलो दो बाहर का बॉल। 4-14। और अंदर घुसना। लेटा 3-12। 3-12। खेल मजा नहीं है तो खेलो मत।